Hello, good morning. This is your mentor, and this is the business coach, hospitality business coach, and motivational speaker. Good morning to everyone once again. Today we'll discuss very important thing. What should be the students think? Student का today section will be in Hindi and English. Both combination will be there. अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक स्टूडेंट का क्या थिंक प्रोसेस होना चाहिए और इन फ्यूचर के लिए। अभी स्टूडेंट्स है तो क्या थिंक प्रोसेस होना चाहिए उनका। जब पढ़ाई करने का टाइम में बाय द टाइम द स्टूडेंट इज स्टडिंग इन द कॉलेज और इन द स्कूल, our culture is really embracing everyone from the starting from the friend circle, from the guardians, and from everyone. Our mentality is nowadays to study hard for, let's say, 20-25 years or 30 years, then to take a job, to be in the routine life, to be in the comfortable life. But in my opinion, and from the most successful people's opinion, our thinking should be not to take job, our thinking should be to give job. In the sense, what I am telling is to give the job, in the sense this is should be the mindset, should be the mindset for the students nowadays they are studying, or maybe whoever already studied and struggling to get a job. Our mindset should be in that level. Today I will discuss not in brief but basic things, but our upcoming videos I will definitely guide you and I will definitely explain you everything about what will be the mindset and how the mindset will be to give the job. A simple calculation, once from the childhood we will start studying, then for let's say 30 years we get a job, then let's say a government job as we all are looking for. After getting a government job, we do jobless for 30 years, then 60 years let's say you will get retirement, then after 60 years until our life cycle, another let's say 25 to 30 years. So 30 years from the beginning and 30 years after the retirement, these times is really a wastage of time. So our mindset should be to give the job, in the sense to be the owner, to be the creator, to be the pathfinder for everyone. Then coming to the next stage is the self-confidence. This, to give the job, it depends on the self-confidence. Self-confidence in the sense you have the thinking, you should have the thinking that I can do it. Can do a teacher will build your self-confidence. Let's say an example, if your mind is thinking, अगर आपका माइंड थिंक कर रहा है ना, आप ये कर सकते हो, वो कहाँ से आएगा? That will come from your sixth sense. That will be coming from your sixth sense. So upcoming video also will definitely describe how to build your sixth sense stronger. The self-confidence, how much you will have, that much success ratio you will get to give the job. Next we'll discuss about avoid fear of loss. हम लोग का एक फियर होता ना, यार ये करेंगे तो लॉस हो जाएगा, यार वो करेंगे तो लॉस होगा। अरे स्टार्टिंग करो ना, पहले लॉस तो होगा या प्रॉफिट होगा, दैट इज कॉइन्स टू साइड्स। बट हम लोग का ये ना स्टार्टिंग का प्रॉब्लम होता है, हम लोग कभी स्टार्ट नहीं कर पाते। इफ यू विल स्टार्ट ओनली, देन ओनली वी नो आइदर इट विल सक्सेस और इट विल नॉट सक्सेस। बट इफ यू विल थिंक ओनली, if you will only thinking and we are not acting, then you will not be the loser or you will not be the winner. You will be the person only the thinker.
ये जो फियर है, दैट इज द फियर इट नॉट टेकिंग यू फॉरवर्ड. वी हैव टू किल द फियर टू प्रोसीड. फियर को किल करने के लिए भी ना बहुत प्रोसेस है, और एक एक प्रोसेस ना हम लोग अपकमिंग वीडियो में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपका करियर ग्रोथ में ना मेरे को पूरा ट्रस्ट है कि आप कर सकते हो, क्योंकि एवरीवन कैन डू इट. एवरीवन गेटिंग एवरीथिंग. Life, two legs, two hands, everything, brain, everything. No one born special. Everyone tries to be special. एंड कैसे हम लोग ट्राई करेंगे, कैसे फियर ऑफ लॉस को हम लोग ये करेंगे, तो ये सारे ना बाय प्रोसेस, ये ना हम लोग समझ नहीं पाते, तो इसीलिए ना हम लोग पीछे पड़ा रहते हैं. इसको समझना जरूरी है, और कोई कॉलेज में कोई स्कूल में ये सब सिखाते नहीं है. नो वन टीचर्स इन द कॉलेज, नो वन टीचर्स इन द स्कूल. Even your circumstance, your friend circle, your best wisher, they will never teach you about this. So we have to be serious, we have to be guided, and we have to avoid fear of losses. Take suggestion from the person who is well in this sector. ये बोलने का मतलब ये है कि मान लो आप कुछ करने के लिए जा रहे हो, कुछ करने के लिए चाह रहे हो, नेगेटिव थिंकर्स ना भरा पड़ा है. देयर इज मेनी नेगेटिव थिंकर्स, यू नेवर नोज. मे बी योर बेस्ट विशर इज द नेगेटिव थिंकर, मे बी योर सर्कमस्टेंस इज द नेगेटिव थिंकर, मे बी योर लेक्चर इज द नेगेटिव थिंकर. नेगेटिव थिंकर को आइडेंटिफाई करो. नेगेटिव थिंकर को कैसे आइडेंटिफाई करें आप कुछ करने के लिए बोल रहे हो, पहले ना वो ना कर देंगे, पहले बोलेंगे अरे ये होगा नहीं तुमसे. दैट इज द नेगेटिव थिंकर. इफ यू वांट टू डू समथिंग, you have to discuss, and if someone is telling no, let's give a try, that percentage of people 0.0001%, if I am not wrong. एक एग्जांपल देता हूँ आपको. आप ना चाय का दुकान में जाओ, सुबह चाय ऑर्डर करो. चाय का दुकान में ना 10-15 आदमी जैसे वो खड़ा रहते हैं चाय पीने के लिए डेफिनेटली. तो आप ना एक ट्राई करने के लिए ना आप कोई सा भी टॉपिक में, लेट्स गिव एन एग्जांपल, यू वांट टू मेक ए चेयर. आप ना ये डिस्कशन वहाँ पे कर दो, आपको वो बोले जाने या ना जाने, बस ऐसे ही ना फ्रेंडशिप की तरफ एक बोल दो, यार आई वांट टू मेक ए चेयर एंड रियली आई डोंट नो हाउ टू मेक ए चेयर. They will definitely suggest you how to make chair. They are very good people, right? They will definitely give you suggestion that you make like this, you do that. But ask them in the last, have you made ever chair? They will say no. So they are not the person to whom you have to take the suggestion. The carpenter may teach you how to make a chair. Why I given you example? Because many places na people they are ready to give you the free advice, even though they knows or they don't know about the sector. And we are the people who are really believe in that, and will quit the things. Let's say I want to give a very good exam, let's say UPSC example. You start discussing with your friend circle, with your good wisher, who never tried to give this exam, but they will guide you 1,000 times with confidence that you will believe no they are right and I am wrong. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे ना सब कोई फ्री एडवाइस देने में बिजी है, लेकिन आप वो राइट पर्सन के पास जाओ जो एक्चुअली वो सेक्टर में परफेक्ट है, वो आपको परफेक्ट गाइड कर सकता है, और उनका गाइडेंस ना आपको बहुत हेल्प हो सकता है. ऐसे लोग के पास मत जाओ ना जो फ्री ज्ञान बांट रहे हैं. फ्री ज्ञान आपको चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो फ्री ज्ञान लेने से आपका करियर चले जाएगा. आई एम 100% श्योर अबाउट इट. More we'll discuss. This is really funny things, but this is very serious nowadays. Quick action taking. आप ना क्विक एक्शन टेकर बनना सीखो.
ये बनते नहीं है, ये अंदर से आता है। कैसे होता है? आप ना, मान लो कुछ करने के लिए आप विलिंग कर रहे हो, कुछ इच्छा हो रहा है आपको करने के लिए, उसको ना रिसर्च करो और आप डिले मत करो। मेरा बोलने का मतलब है आप डिले मत करो, एक्शन क्विक लो, जिसमें ना आपको बेनिफिट हो सकता है। अगर आप क्विक एक्शन ना ले, कोई दूसरा कर सकता है उसको, कोई तीसरा कर सकता है, लेकिन आपको अगर करना है तो एक्शन क्विक लेना है। आप जितना डिले करेंगे वो आपका मन से चले जाएगा, इट विल वैनिश फ्रॉम योर माइंड। You want to do something good, you do it. Result will come, result will depend on your ability and your willingness, your things for that. But don't be delay. क्विक एक्शन लो ना भाई। लाइफ में कुछ कोई लेके नहीं आया, कोई लेके नहीं जाएगा, लेकिन आप एक्शन क्विक नहीं लेते हो तो हाथ से चले जाएगा। दैट्स द वे यू हैव टू। और डिले को अवॉइड करो, हमेशा डिले को अवॉइड करेंगे ना, हर कुछ चीज़ ना लाइन में आ जाएगा, पटरी में आ जाएगा, जैसे बोलते हैं ना, पटरी में आ जाएगा। दैट्स ट्रू। इफ यू वांट टू डू समथिंग, टेक इट वेरी क्विक एक्शन, क्विक डिसीजन and research, because if you are willing to do something means you already did the research. I am believing in that you already did research. So आपको ना ये करना चाहिए। इग्नोर द क्रिटिसिज्म। आप ना क्रिटिसिज्म को इग्नोर करो। अरे मैं ये कर दूंगा तो मेरे को कौन क्या बोलेगा, ये सब सोचने का नहीं। क्यों? क्योंकि इफ वी आर थिंकिंग ऑफ दिस, you will never grow in the life. I'll give you a very good example in that. When I was started to learn the English, I was not perfect in the English, even though 5% also. But I never think that I will speak, then many people will laugh at me. But this happens. This happened with me. But I never mind in that. Criticism को avoid करना, कुछ सीखना है लाइफ में। If you want to learn something in the life, you have to learn how to avoid the criticism. आप कुछ नया करने के लिए जाओ ना, 1000 पीपल से क्रिटिसिज्म मिलेगा, वो क्रिटिसिज्म को आप अवॉइड करना सीखो। वो क्रिटिसिज्म आप अवॉइड जब से करना सीखेंगे तब से आप ग्रो करेंगे। क्रिटिसिज्म ऐसा भी आता है क्योंकि कोई चाहता है डेवलप करने के लिए, वो डेवलप नहीं कर पाते, वो स्टार्ट नहीं कर पाते, के लिए आप स्टार्ट कर ले तो क्रिटिसिज्म डेफिनेटली करेगा वो। और किसी को भी बुरा भी लगे तो क्रिटिसिज्म वो करेगा। बुरा लगे मतलब मान लो कि कोई अच्छा इंग्लिश बोलने वाले के पास जाके आप टूटा मोटा इंग्लिश बोल रहे हो सकता है वो क्रिटिसिज्म करे आपको, लेकिन you don't have to mind in that, because you have to learn these things. they are they are well known about this or no, that doesn't matter, but you have to continue doing this. Avoid criticism करना है। एक वर्ड में है ना, कहावत है जो एक्चुअली ट्रूथ भी है, फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। ये एक्चुअली ना जो भी बोला है, जो भी बोलते हैं अभी हम लोग इन्फ्लुएंस में, वो एक्चुअली राइट है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। अरे फेलियर होने के लिए डरने का नहीं है, फेलियर होगा तभी सक्सेस होगा। वंस यू विल बी फेलियर ना, यू आर द नेक्स्ट सक्सेसर, you will be the next success person. Don't afraid to be failure, as I told in the beginning things as well. और ना आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। आप एक स्टूडेंट हो, इफ यू आर ए स्टूडेंट ना, यू हैव टू नो हाउ टू मैनेज योर टाइम। इन द स्टूडेंट लाइफ दैट एवरीवन नोज, we love chit chatting, we love things that beyond of the world, like I'm sorry, but like alcoholic things, like lot of things, like love affair, like lot of things that it will kill your time, and you never knows, because that is the age you will do it. But once someone understand now this is the management of the time, they will not waste the time like unnecessarily, then they are the successor. I'm giving 100% by writing also. If someone is managing the time from the school time, from the college time, because there someone is not managing because they didn't get the good mentor, because parents they can guide you but they cannot mentor you, not every time but most of the time.
सो टाइम मैनेजमेंट ना हमको सीखना है. We have to avoid wasting our unnecessary time. We have to utilize that time. But we have to think out of the box. अगर आपको सक्सेस बनना है ना, एक बहुत ज़रूरी बात है, आपको ना प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना चाहिए, सीखना चाहिए. Try to identify the society problem and try to solve it. Once you will solve it, that will definitely will give you the ample amount of money or whatever you are using it. So we have to try now to identify the problems of the society, identify the problem of the people, try to solve it, and you will be the first person to solve it and you will be the first person to win it. आप अगर प्रॉब्लम फाइंडिंग सीख जाते हो ना, आपको सॉल्यूशन भी आ जाएगा फटाफट. कैसे आएगा? हाउ यू विल गेट द सॉल्यूशन? एवरीवन इज लेट्स गिवन स्मॉल एग्जांपल. टूथपिक. Before now, we didn't used to have toothpick, let's say 100 years, 200 years, whatever you think it previous days. But everyone is suffering. But some people, maybe one of them, maybe they identify. Okay, let's, because he identified the problem and he identified the solution. He built up the toothpick. Now everyone we are using and everyone we are getting the benefit of it, and definitely he is earning the ample amount of money. I have given you the small example. You find out from the aeroplane, from the any machinery device, that someone had identified the problem and someone had identified the device. So he is the winner in the world. I am very early to discuss with you. Find out the asset and find out the liabilities. Our mentality is not different to find out the asset and to find out the liabilities. Asset, just for a simple language, this one we'll discuss in the further video in the brief. Asset. Asset ना वो होना, उसको asset बोलते हैं ना, that we are telling asset ना, the investment ना will give you return in the money. You will think everyone is saying that my home is my big asset, my car is my big asset, my bike is my big asset, this thing is my big asset, but that is wrong. Big asset, the things what is giving you money back. Let's say you spend some amount on your self development, that is a big asset. How? Because that knowledge can make you more wealthier, more rich in that. So that is the big asset. Liabilities. What will give you loss? Let's say you bought a car, let's say for 10 lakhs, but if you want to sell after 1 month, this cost you, means like if you want to sell, you can sell it by, let's say, 8 lakhs or 6 lakhs. So that is a loss of money. That is a liabilities, as I consider, and as most wealthier people they consider. If you are a student now, you might have many friends, or you might have few friends, or you might have no friends. That is impossible, but let's say you have no friends, but let's say you have some creative idea to solve the society problem, but whatever friend circle you have, you want to discuss in that, but they don't have that kind of mentality, they will demotivate you. So you have to have the skill to find out your friends, to select your friends who is having this kind of mentality. Let's say you want to do something, that same kind of mentality he is having, then you make friends. I'm not telling you to quit your friends, I'm telling you to make more friends, but with the same mentality, with the same spirit, with the same energy. Some people they always love to sleep, and if you will stay with them, you will also feel like, okay,